Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Students, today we are going to study the grammar section of your book, unit number 3, and it's about the use of pronouns. And first of all, they have talked about the use of personal pronouns, and then in the second part of this same lesson, they have talked about the use of indefinite pronouns. So in our next video, we will talk about indefinite pronouns, and here we will discuss about the uses of personal pronouns that they have discussed. In fact, most of the concepts that actually are presented here are well known to you, but for the sake of revision, we should study them. So these are the 5 most important concepts about the use of pronouns that they have discussed in your book. So first of all, let's be clear about antecedent of a pronoun. Antecedent of a pronoun means the word that a pronoun refers to. Okay, जिस वर्ड को प्रोनाउन रेफर करता है वो उसका एंटीसीडेंट होता है. एंटीसीडेंट का मतलब ये होता है जिसका जिक्र पहले किया गया हो. ठीक है ना. तो यहाँ पर जो है द बॉय वॉज नॉट हैप्पी विद हिज रिजल्ट. सो हियर हिज इज अ प्रोनाउन and this pronoun is actually referring back to boy because this word is used for boy. The boy was not happy with his result, so that means boy is the antecedent of his. Okay, so hopefully you would have understood the concept of antecedent. And number 2, the concept of gender, number, and person in pronouns. So here, students, if you look at this slide, you can see that pronouns can simply be divided into 3 persons: first person, second person, third person. In first person we have got I and we. That means those pronouns, those who are talking, baat karne wale. Okay, so I and we, whenever people talk, they use the words I and we. So I and we are the first person pronouns. And also it's quite simple to understand their number means singular or plural. So I is singular and we is plural. Okay, and you can be used both for singular and plural nouns, and it is the second person pronoun. Okay, you and thou is the old form of you, by the way. And number 3, he, she, it, and they. Okay, so here he, she, it, and they all are the third person pronouns, and they is the plural pronoun, and he, she, it are the singular pronouns. Okay, and you all know that by gender we mean masculine and feminine. So as far as he is concerned, it is a masculine pronoun, and she is a feminine pronoun, and the other pronouns can all be used for the masculine and feminine, for both as per the situation. So these concepts are also quite simple: gender, number, and persons in pronouns. Okay, number 3, the use of pronouns with singular and plural subjects. Well, it's quite simple, as you know that the singular nouns always take with them the singular pronouns, and the plural nouns always take with them the plural pronouns. Okay, so it's quite simple, by the way. Number 4, the use of the pronouns with compound subjects. Okay, so what are the compound subjects? Compound subjects are the subjects that are joined by and, or they are joined by or nor. Okay, so here I have written a few examples for you. The tiny cupboard and dresser still have their original hardware. Here you can see that 2 singular nouns or 2 nouns are joined by and. So when the 2 nouns are joined by and, they become the plural nouns, and the pronoun that will be used for them will also be plural. Okay, तो pronoun भी जो है यहाँ पर plural है, क्योंकि ये 2 nouns जो हैं ये and के जरिए से जुड़े हुए हैं और ये plural noun बन गए हैं and की वजह से. Okay, and next one is neither the scientist nor the administration neglected its duties. अब यहाँ पर जो है एक जगह पर जो है इट्स यूज हुआ, और दूसरा सेंटेंस देखिए, either the administration or the scientists have neglected their duties. तो ये क्या मामला हुआ जनाब कि एक केस के अंदर आपने सिंगुलर प्रोनाउन यूज किया है एक ही किस्म के 2 नाउन्स के लिए जो कि या तो और नॉर से जुड़े हुए हैं, और दूसरे केस में आपने जो है प्लूरल नाउन यूज किया है देयर. तो इसका सिंपल रूल जो है वो यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया स्टूडेंट, दैट प्रोनाउन इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द नाउन नियरेस्ट टू और एंड नॉर. यानी कि और नॉर के बाद जो नाउन आपका आएगा उसके मुताबिक आपने जो है अपना प्रोनाउन अब यूज करना है. तो यहाँ पर देखें कि नॉर के बाद जो है एडमिनिस्ट्रेशन आ रहा है, और एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एक सिंगुलर नाउन है, लिहाजा हमने जो प्रोनाउन यूज किया यहाँ पर इन दोनों के लिए वो भी सिंगुलर है जो कि इट्स है. ओके, लेकिन यहाँ पर आप देखें कि और के बाद जो है वो एक प्लूरल नाउन आ रहा है, साइंटिस्ट्स. ओके, सो यहाँ पर हमने जो उनके लिए एक प्लूरल प्रोनाउन यूज किया देयर. So here the simple formula is that when the nouns are joined by or nor, we always use the pronoun according to the
noun that comes after or and nor. अगर और के बाद और नॉर के बाद कोई सिंगुलर नाउन आ रहा है तो हमारा प्रोनाउन भी जो है वो सिंगुलर होगा, और अगर और या नॉर के बाद कोई प्लूरल नाउन आ रहा है तो हमारा प्रोनाउन भी जो है वो प्लूरल होगा, ठीक है। तो दिस इज अ सिंपल फॉर्मूला। एंड नंबर 5, यूज ऑफ द प्रोनाउन विद कलेक्टिव नाउन्स, ठीक है। कलेक्टिव नाउन्स आप जानते हैं वो नाउन्स होते हैं जो कि चीज़ों की कलेक्शन को शो करते हैं, जैसे कि फैमिली, पोल्ट्री, जुडिशरी। तो इसमें जो है ना, कोई एक आदमी मिलकर जुडिशरी बनाता है, कोई एक आदमी मिलकर क्लास नहीं बनाता है, कोई एक आदमी मिलकर फैमिली नहीं बनाता है, बहुत सारे लोग जो हैं, दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर जो हैं वो चीज़ें कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप इन दो एग्जाम्पल्स को देखिए। द फैमिली दैट ओन्स द हाउस लोन्ड इट्स ट्रेजर टू द लाइब्रेरी। तो यहाँ पर फैमिली जो है वो एक कलेक्टिव नाउन है, लेकिन उसके लिए जो प्रोनाउन यूज हुआ है वो इट्स है। और नेक्स्ट एग्जांपल में आप देखिए कि फैमिली वांटेड देयर फ्रेंड्स टू सी द हाउस, और वही सेम कलेक्टिव नाउन फैमिली यहाँ पर भी यूज हुआ, लेकिन इस दफा इसके लिए जो प्रोनाउन यूज हुआ है वो देयर यूज हुआ है। तो जनाब ऐसा क्यों है? तो इसका सिंपल सा जवाब जनाब ये है कि यहाँ पर फैमिली जो है एज ए यूनिट, एज ए सिंगल यूनिट जो है अपने आप को शो कर रहा है, यानी कि ये जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं उनका मुतफिका फैसला था टू लोन इट्स ट्रेजर टू द लाइब्रेरी। सो लिहाजा यहाँ पर जो है इट्स यूज हुआ, बिकॉज दे आर वर्किंग एज ए यूनिट, दे आर फंक्शनिंग एज ए यूनिट। हियर वी कैन से दैट आवर कोलेक्टिव नाउन इज वर्किंग एज ए यूनिट। तो जब हमारा कोलेक्टिव नाउन एज ए यूनिट काम कर रहा होगा तो उस सूरत के अंदर जो है हमारा जो प्रोनाउन यूज होगा उनके लिए वो सिंगुलर होगा। लेकिन यहाँ पर जो है जो फैमिली है उनके मुख्तलिफ दोस्त हैं, ठीक है, और वो सारे फैमिली मेंबर्स जो हैं वो डिफरेंटली जो है अपने सारे दोस्तों को चाहते हैं कि वो उनके घर को देखें। सो द फैमिली वांटेड देयर फ्रेंड्स टू सी द हाउस। अब देखिए ना कि हर फैमिली मेंबर के अपने अपने दोस्त होंगे, लिहाजा अब यहाँ पर जो है हर फैमिली मेंबर को जो है इंडिविजुअली जो है वो ट्रीट किया जा रहा है। तो ये वर्ड जो है आप जरा ध्यान में रखिए कि अगर कलेक्टिव नाउन्स जो हैं उनमें जो मेंबर्स हैं उनको इंडिविजुअली ट्रीट किया जाएगा तो फिर उस सूरत के अंदर जो प्रोनाउन उनके लिए यूज होगा वो प्लूरल प्रोनाउन होगा। Okay, so hopefully students you must have understood these 5 concepts that are presented here in this grammar section of your book। और अब अगर आप खुद जब इन concepts को यहाँ पर पढ़ेंगे और इनकी रोशनी में ये exercises करेंगे तो ये concepts और भी ज़्यादा जो हैं वो perfect हो जाएंगे और भी ज़्यादा clear हो जाएंगे। Okay, thank you so nice of you। अस्सलाम वालेकुम।